हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द निफ्टी शो के एक और नए वीडियो में। काफ़ी दिनों का ब्रेक रहा बीच में वीडियोज़ आने में। काफ़ी हालांकि मुझे आपसे ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, मैं हूँ भी ट्रांसपेरेंट, बट मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ दिनों का ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है मेरे माइंडसेट को सीखने के, और मैंने वही किया। काफ़ी दिनों तक आज कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा था कि कहीं पैटर्न रिपीट ना हो जाए, और अब पैटर्न वही रिपीट हुआ। मेरे एक प्रॉफिट का 4 लॉस होते थे, इस बार एक प्रॉफिट का तकरीबन 10 लॉस हुआ। यस, आई नो दैट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन टू एनी ट्रेडर। सो इट वाज अ लूजिंग स्ट्रीक ऑफ 10 ट्रेड्स, बट यस, एवरी ट्रेड वाज अ सिस्टम ट्रिगर। आई नेवर ब्रोक माय सिस्टम ट्रिगर्स एंड आई फॉलोड देम, बट उसके बाद भी करीबन 10 लॉसेस झेलने पड़े। सब कुछ सिस्टम के हिसाब से थे, लॉस बिल्कुल लिमिटेड थे, बट देन अगेन एक काफ़ी बड़ा डेंट लग जाता है आपके साइकोलॉजी पे व्हेन दिस हैपेंस। तो कुछ ये रहा आज का पेन, 1000 रुपये का, और मैं सिस्टम को फॉलो किया। चलिए बात करते हैं आज की ट्रेड के लॉजिक के बारे में। तो चलिए निफ्टी को अगर हम देखते हैं, चलिए निफ्टी को देखते हैं थोड़ा सा। पहले सुबह को अगर मैं बात करूँ तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अर्ली आवर में ही बन रहा था। करीबन 10:30 में उसका ब्रेकआउट आया। 10:51 पे उसने रिटेस्ट किया, लगभग 10:55 10 के करीब, और रिटेस्ट करके वो बहुत ही अच्छा ट्रिगर था। बट क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा स्टीप डाउन साइड डाली थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा कन्विक्शन नहीं आया और मैंने उस ट्रेड को स्किप किया। और ठीक करीबन 2 घंटे बाद, नॉट 2 घंटे, करीबन 1.5 घंटे बाद एक फिर से डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनता दिखाई दे रहा था। बहुत ही क्लियर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था। उस पर मुझे अपने सिस्टम का ट्रिगर दिख रहा था। जैसे ही मुझे रिटेस्ट आता, मैं एंट्री लेता, ब्रेकआउट हुआ, मुझे लगा ये एंट्री में मिस हो गई, शायद ये काफ़ी काफ़ी शार्प रैली आएगी, और ब्रेकआउट के जस्ट बाद ऊपर गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट के जस्ट बाद ऊपर गया है, काफ़ी ऊपर गया है, लगभग करीब 40 पॉइंट ऊपर चला गया। 40 तो नहीं, हाँ वही वही करीब, हाँ 30-40 पॉइंट्स एक बार में ऊपर गया है। एक बहुत ही वन साइड रैली का था, बट बहुत ही टेक्स्ट बुक पैटर्न के हिसाब से, जैसा बोलते हो, टेक्स्ट बुक पैटर्न के साथ बिल्कुल ऊपर गया, ब्रेकआउट दे, देन इट केम बैक टू रिटेस्ट, देन इट वेंट बैक अगेन, and not just up, it kept on going up. So as you can see, it also came back, it also retraced a little bit, but then also the retracement, the retest that happened with the trend line, it was still above that. So for the people who like to ride on trend, this could have been the perfect trade opportunity, where they could have captured more than, yeah, they could have captured close to 100 points non nifty. So that's 50 points based on my system, which is a phenomenal trade to start with. So yeah, that's that. So I followed my system trigger. I entered, I did the retest. I would not say I'm at the top of my game, because when the price retested, I was giving myself reasons not to take the trade. But when I saw the green candle formation happening right at the retest, I took a entry on market order, and when that happened, I did not get the best price. So it was supposed to be 169. Ideally, my plan was 169. So before we get to that, let's come to the option thing. The price was dwindling at around 16,970. So I took the next week 18 option, that is Nifty 20 October 70,000 C. I added that to my watch list, and just at the same moment, around 12:34, I entered, and as you can see, let me just zoom in for you. So this was my entry. This was my entry, and as you can see, I entered at say 173. I was planning on entering at just at the retest, exactly at the lowest point. That's around 167. I planned on entering, but then I got into skepticism, and second guessed myself, and I waited. And when I saw this green candle formation, I kind of felt that okay, this might be my system trigger. And in that emotional roller coaster, I took an entry on the next candle. Although just after my entry, the price dwindled a little bit. I would not even say dwindled. It was just retracing a little bit to further go back up again. And I entered. I was planning to enter at 169, but I missed that train, and I had to book it at 170. Not book it. I entered at 173. So I entered at 173, and right, this was my entry, 1234. Okay, and around this point, the price might have gone up, and then it came back down again. See, I'll show you how close it was. So I entered at 173. Like I said, my plan entry was at 173, but 169. But since I placed the market order, it executed at 173. I know that always happens, so no worries. It was again a system trigger. I followed that trigger, but as you can see, right in the next two candles, the price made a low of, according to the system, I keep a stop loss of 4 points, and I did keep a stop loss of 4 points. It's around 169, and as you can see in the next two candles, the second candle itself. The price made a low of 169.45. So yes, technically it missed my stop loss by 0.55. So that was, you can call it a lucky trade, but that again is based on the system, and I did follow that trigger. And although if I had entered at 169, that would have been a great win-win situation, and there would not have been any possibility of the price coming to my stop loss. तो ये था possibility, ऐसा देख सकते हैं। और प्राइस ऊपर गया,
इसकी जस्ट यस दैट इज हाउ इट हैपेंड। यहाँ के बाद तो प्राइस ऊपर चला गया। बहुत ही शार्प रैली, मतलब 34 मैंने एंट्री की और मेरा टारगेट बुक हुआ बिल्कुल 12:44 में। बिल्कुल 10 मिनट का ट्रेड था और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया ये ट्रेड आज। तो 10 मिनट में आप देख रहे हो मेरा टारगेट फिर हुई। उसके बाद अगर कोई ट्रेंड को राइड करना चाहता था तो उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। दे कुड हैव इजीली गॉट अराउंड 100 पॉइंट्स। आप देख सकते हो इस पॉइंट 716 के लो से हाई बना था करीबन, मैं दिखाता हूँ शॉर्ट करके। But then again, that's hypothetical. People are not used to all those fluctuations. Price just did dwindle to 170. So this was a test of the patience. If they would have stayed put, they could have, you know, been able to cash out in the entire trend. So right after making the low 170, it went back up again in another 20. Yeah, so it went back in 45 minutes. Yes, so in another 1 hour, it went up close to 40, 50 points. So that's a great rally. 50-point rally in one goes. A phenomenal thing to go for. And that is what happened. और आप देख सकते हो कि काफ़ी ब्यूटीफुली परफॉर्म किया आज ये पूरा पैटर्न। पैटर्न ऑलवेज वर्क्स। और जहाँ तक मैं बात कर रहा था अपने लूजिंग स्ट्रीक का, मेरी इसी तरह की गलती की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेकंड गेसिंग, मी सेकंड गेसिंग ऑन सिस्टम बिकॉज ऑफ द स्ट्रीक, इट फक्स अप योर mindset. You are forced to believe that okay, this might not work for you, but even if the pattern is working just fine, you would not really work according to your system. So that's what happens today. Also, I was in a doubt, and that costed me 4 points. I would have gotten away earlier, but that's that. That's part and parcel of the game, and so that's not a big deal. Yeah, so that was the trade for today, and let me just share the order book with you. जैसे मैंने कहा 12:34 चली लगभग 12-10 मिनट में ही मान लो इसको। 10 मिनट में आपका ये 20 पॉइंट्स का टारगेट हुआ। 4 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस 25,000 का था। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैंने ट्रेड लिया है आज। काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता था, और हुआ भी। पहला ट्रेड अगर मैं लेता तो वो स्टॉप लॉस होता, जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रहा था। और जैसा मैंने कहा, काफ़ी एक सीरीज ऑफ लॉस के बाद आपका दिमाग काफ़ी गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट माइट स्क्रू अप your decisions. So this is where I just followed my system that okay, I'll only enter on return and did. Even if that means missing out on a few high probability trades, I will, because I know if you are not strict enough with your rules, you would not be able to make it. The more variables you add to this equation, the more difficult it is for you to manage it all. So that was it. This was sort of booked around. So the return on investment, if I were to say 173, that's close to. Let me just open the calculator for you. So 173 into 50. So the investment was 8,650. The return investment would be 1,000 divided by 8,650. Okay, so this was the trade. If merit percentage, so it's 11%. So 11% is the call. 11.5% return on investment in 10 minutes. So this one good trade made up for my 5 losing sessions. So I would not give a pat on my back for this thing, but then also just because I was able to bounce back from a losing streak is something that deserves a little bit of applause. I would give that to myself. So yes, I'm putting the trade snippet right after this. You can look at how the price fluctuates and how the target was met, and how the real dynamic works in trading. So yeah, so this was the video for today. I'll catch you in the next one. Please, if you like this video, please like the channel, and please subscribe the channel, like the video, and share it with your friends who wants to get some first-hand insight as to how the trading works, real world trading. So I'm just a beginner, so you would probably relate with me more than any professional videos, the one who has made it, because I am starting out right now. I have learned from them, but just so that I could put out my perspective, wherein how and when do you tend to fuck up, when do you excel, you'd get that first insight from me. So yeah, this is the trade, and please subscribe to my channel, and yes, that's I'll see you tomorrow in the next one.